हम कह रहे थे JavaScript statements compose of values, literals and variables. So वही बात होगी कि list और variables का ओके operators का आपको पता ही है. Comparison, less than equal to, okay, conditional type, ठीक है. आप एक expressions होते हैं वो मतलब आपके and or keywords, comments, ठीक है. Right. Functions to be excluded when an event occurs, when an event invoke from code automatically self invoking. इसके बेटे एग्जांपल है automatically self invoking. ये भी हो सकता है कि on load of a body we can call a function, ठीक है. when invoked from code, so हम कोड में ये है कि when we click on a button, ठीक है, तब होगा. और इसमें वन इन्वोक फ्रॉम कोड का ये भी मतलब है कि दिस कुड आल्सो बी, आगे डिस्कस किया उन्होंने, एग्जीक्यूशन टाइम इंटरवल मेथड्स, ठीक है. टाइम इंटरवल, मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ. टाइम इंटरवल का यूज होता है. सो लेट्स से I'll make a new one and we'll talk about time interval. So create. So let's say over here हम ये काम करते हैं कि we'll just make is a script. Okay. और ये हम करेंगे function for me. Yeah, why do I use is the anyway. ठीक है, fine. Right, so I'll say is document dot write uh okay, serious about IT now. Okay, right, I'll put a space. And what we'll do is comma. We will put this in a BR. Okay, or we can probably use an HR. Right. और हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फंक्शन है, फंक्शन को हमने कॉल करना है बार बार. तो हम यहाँ करेंगे इज सेट इंटरवल, ठीक है. और हम कॉल करेंगे इधर कॉल मी फंक्शन को, ठीक है. और इसको हम कॉल करेंगे इन 1 सेकेंड. ठीक हो गया. तो इसको हम करते हैं फाइल सेव एज, और इसको I'll save it here and I'll save it as set interval के नाम से. Okay, HTML. I'll come here and let's open up set interval. Okay, so what do we get? So you see, after every 1 second, that function is being called. ठीक है, ये आपकी एग्जांपल होती है set interval की. So set interval can be used in multiple ways. इसका एक पेपर भी आया था जिसमें उन्होंने गैलरी बनाई थी using set interval, ठीक है. So every time you want to call a function, we can actually use set interval. ये ज़हन में रखना, ठीक है. This is what they meant by set interval. Okay, this will keep on going on. Okay. Okay. Execution interval, set timeout interval is quite the same thing. वो एक ही चीज है. Program comments and to annotate and explain the code, including single line, multi line, वो आपको idea होगा ही. So if you want to have some comments, you can have this as a single line. You can have this as a multiple line. Okay, you can put single line comment here, and if you want a multiple line comment, you can probably use this. Okay, so in here you can actually have is lots of multi-line comments, right? Okay. uh, JavaScript loops for iterative using for loop, for in loop, while loop, do while loop, ठीक है. So loops का आपको idea है. Remember we also discussed was so for in multiple for loops भी हम discuss किए हुए हैं. Is that clear? You okay? There's a lecture of mine again जिसपे हमने सब discuss किया हुआ है. Okay, nested for loop and for loop inside that. While loop, do while loop, precondition and post condition loop में discussion की हुई है. Anyone wants me to revise this again? मुझे बता दो. What we have discussed, ठीक है. JavaScript statement, data type, वही हो गए, type conversions,
टाइप कन्वर्जन ये है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय वन, और या वो हम तो ऑब्वियसली वी कन्वर्ट द टाइप फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर्स, या इसके साथ हम यूज कर सकते हैं पार्स इंट, आई टोल्ड यू। ओके, इफ यू यूज पार्स, Yes, sir. हाँ, अब अगर आप ऐड करते तो वो काम नहीं करता, पार्स इंट से काम करेगा, या मल्टीप्लाई वन कर लो। वेरिएबल्स एंड जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर कंपैरिजन, ठीक है, आगे सारे कंडीशनल लूप्स, ब्रेक, ब्रेक यूज होता है वो स्विच स्टेटमेंट में, ठीक है। अच्छा, स्विच निकाल दिया इन्होंने, दे हैव नॉट मेंशन्ड स्विच। ब्रेक, इंटरेक्शन, अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कंफर्म, फंक्शन, एग्जीक्यूट टाइम टेबल, ठीक है। स्विच इज नॉट देयर, बाय द वे। Sir, पहले, what is break? हाँ, ब्रेक What बेटा is होता है break? कि इफ यू आर रनिंग एनीथिंग, मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप इफ देन एल्स यूज करें, जो भी करे, आप कोड को ब्रेक करना चाहते हो, आप ब्रेक लिख दोगे तो वहां वो ब्रेक हो जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। सो एनीवेयर यू Okay. वांट टू स्टॉप द कोड, ओके, ब्रेक इट। फॉर एग्जांपल अगर लूप चल रहा है, लूप में ब्रेक कर सकते हो उसको ऐसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसकी ब्रेक की। लेट्स से आई कैन डू दिस इज, आई कैन यूज ओवर हियर इज variable a is equals to 0, uh, while uh, a is less than and equal to 12. Okay, uh, document dot write, I can use over here is a, और वही मैं चीज करता हूँ कि मैं इसमें ना डाल देता हूँ, लेट्स से HR, राइट। और मैं कहता हूँ a is equals to a plus 1, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। Variable while this is condition increment, कुछ एक्स्ट्रा डिफाइन नहीं किया और मैंने, नहीं। तो आई गेट दिस, ठीक है। इसमें काम करते हैं कि मैं काम ब्रेक करूँ उसको। um, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ठहरो, ब्रेक, तो ब्रेक के बाद देखो, ब्रेक से ये हो रहा है कि वो टेक्निकली कोड उसको रन हो ही नहीं रहा, बिकॉज इट डजंट लूप अगेन। अब ठीक है, सो मीन वेर एवर यू वांट इट इट टू जस्ट ब्रेक, नॉट गो फर्दर, तो उधर आप ब्रेक उसको यूज कर सकते हो। यू गेट माई पॉइंट। ये ब्रेक ज्यादा यूज होता है स्विच स्टेटमेंट्स में, तो मैं इस बात से हैरान रहा हूँ कि उन्होंने स्विच स्टेटमेंट तो निकाल ही दी है, तो ब्रेक की ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन जरूरत होती है। सो वेर एवर यू हैव टू स्टॉप अ लूप, वेयर देयर यू यूज सो सो अच्छा, देयर इज नो स्विच स्टेटमेंट, हमारे क्रॉस नहीं है टू स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। सर, देखिए while और function और if function का मेन डिफरेंस क्या होता है? इसका बेटा, While और if का? नहीं बेटा, while और if देखो, if इज a सिलेक्शन स्टेटमेंट। if तो होता है कि if a is less than this, then do this, ठीक है। तो while is unless and until the condition is not met, it keeps on looping. For example, इस केस में, um, while this statement is not true, it will keep on looping. If में होगा कि if this is greater than this, then okay, if this statement is to do this, otherwise do this. It's a selection. While is an iteration. It will keep on iterating unless until the condition is not met. If में condition check होती है to do something, यहाँ condition check होती है to keep on repeating something. You get my point? Okay. Yes. That is iteration. That is selection. Okay? Both are different, obviously. Right? इसलिए हम
फॉर एग्जाम्पल, हम एक टेक्स्ट बॉक्स में वी कैन यूज एन इफ स्टेटमेंट टू चेक whether it's empty or not, to apply presence check or length check. ठीक है, but we can actually use a while loop to make the user keep on entering at least something. If you don't enter, okay, you cannot go ahead, right? Yes. Okay. Something like that, exactly. तो बेटा ये हमारा हो गया सिलेबस के थ्रू. सो समहाउ इट्स ऑलवेज एन एडवांटेज कि एक बार सिलेबस को देख ले, सो कोई चीज मिस नहीं होती. ठीक है. ओ सॉरी, है नीचे, होल्ड होल्ड होल्ड. फॉरेन, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स एंड और नॉट कंपैरिजन ग्रेटर देन. मैंने कहीं स्विच देखा है कंडीशनल ऑपरेटर इफ, एल्स इफ, स्विच. स्विच है. ठीक है. मैं यहीं फिर रहा था. ओके, स्विच बता दूं वैसे, रिपीट कर दो स्विच. Yes, sir. हाँ. यस. जी. स्विच बेटा यूं होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कह सकता हूँ लेट्स से वेरिएबल इज इक्वल्स टू. अच्छा, मैंने स्क्रिप्ट डिलीट कर दी गलती से. स्क्रिप्ट, और आई एम सेइंग इज लेट्स से आई कैन हैव वेरिएबल ए, और या वेरिएबल मैं कहता हूँ एस नेम ए, बार बार ए लिख लिख के. प्रॉम्प्ट आई कैन से ओवर हियर इज एंटर द नेम. ठीक है. और यहाँ मैं कहता हूँ कि स्विच, सो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एस नेम. ठीक है. और यहाँ इसका कोड ब्लॉक, एंड आई कैन से इज केस, लेट्स से एंटर द नेम. नेम, लेट्स से वी आर सेइंग इज लैपटॉप की बात करें फॉर एग्जांपल, केस डेल. अच्छा, डेल को मुझे डालना पड़ेगा इन डबल कोट्स कोलन. ओहो. राइट. इसके बाद व्हाट वी कैन डू इज, इफ दिस वर केस, तो हम कह देंगे लेट्स से alert, Dell is a good choice. और इधर हम यूज कर लेंगे आपके ब्रेक को. ठीक है. फिर इधर व्हाट आई कैन डू इज, जस्ट टू सेव टाइम मैं काम करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और राइट. सो लेट्स से hp hp is also good option. Then we can have obviously is Lenovo. Uh, uh, since I have it, it's the best, right? Okay. So here we go. इसको चेक करते हैं. So इसको हम करते हैं फाइल, save as, and I'll name it as, let's say, switch ITCH. Here we go. और हम आते हैं इसको इधर चेक करते हैं, switch statement. So let it open up. So it says enter. I'll enter over here, let's say HP. ओके किया. HP is a good choice. ठीक है. मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ. मैं यहाँ लिखता हूँ is Lenovo. So it says since I have it, it's best option. तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली काम यूं करता है, जस्ट लाइक आप कह लो इफ देन एल्स के लिए, मगर ज्यादा ये क्लीन सा है. इसमें आपने जो भी वेरिएबल नेम लिखना है, एंड स्विच वो आ जाएगा, इसका नाम इधर आ जाएगा. इफ दिस वेरिएबल इज वन ऑफ दिस, it will automatically find that okay, case is this, then do this, then break it. Now this is a good example of break, where you can break, like if I select Dell, then I can break.
If HP is selected, उसके बाद I can break so that it doesn't keep on going all the next statements. So if I have 20 statements and if I find it in the 11th one, it will break after that. ये वो top to bottom जाता है ना, फिर इसको break कर देगा उसके बाद. Is that clear? What switch? Yes or no? Yes, sir. Clear हो गया बेटा all of you? ठीक है. सो Yes. फंक्शंस हो गया, टाइम वर्ड सेट इंटरवल हो गया हमारा, फिर सिंबल्स आ गए. तो बेटा हमारा ये सारी डिस्कशन हो गई है. इसको हैव अ लुक एट अगेन. इफ देयर इज स्टिल एनीथिंग जो आपको फील हो कि नहीं वी हैव टॉक अबाउट, आई कैन एक्चुअली डिस्कस इट, और यू कैन आस्क मी टू शेयर अ वीडियो ऑन इट. ठीक हो गया बेटा? यस और नो? ओके. सो सो अब आपको रीसेंट पेपर जावास्क्रिप्ट का सॉल्व करो. ओके, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ इनकेस कौन कौन से करने हैं आपने. ठीक है. एनी क्वेश्चन बेटा? एनीवन? No. Right? Okay, chalo. Chalo, fine. Okay, I'll stop now from over here. Okay, right? I'll just forward you some activity or paper to do. Okay? Okay. Okay, beta. Any question, Hadia? No, sir. Okay, beta. Okay. Allah Hafiz. Laughing. Hafiz.